Hello everyone. Welcome to today's exclusive session powered by Blue Bindi program, dedicated to empowering women in their financial journey. Today's session is designed to address the real financial questions that, we women have. We didn't just assume these questions. We did our survey, we analyzed trends online, and we gathered the most commonly asked questions from women across our country. Before we dive into the questions and what we have in store for you all today, we when we were actually trying to understand what are those questions, what is it that people want to know, we came across some studies and some stats. So we thought we should share with all the audience today. So women are considered to be excellent savers, but many of them hesitate to they hesitate when it comes to investing. So they will save their money, but it needs to multiply. But that's something they don't do. And there were some numbers that we came across, that one of the surveys by DSP Women Investor Pulse, which was done back in 2023, found out that while 92% of women save money, only 51% of them invest. Okay. And the other one was by the World Economic Forum Gender Gap Report that states that by retirement, women accumulate 30% less 30% less wealth as compared to males, often due to career breaks, the salary pay gaps, and obviously one of the other reasons is that they don't invest, so lower investment participation. So, that's one of the reasons we planned this session today, to understand what are those questions. What is it that, our audience is not doing right, or are not able to get correct answers to understand and figure out their financial journey. But before we dive into this session, there are some, I'm pretty sure you all must have also Googled these questions, but there are some questions that we sort of figured that people are Googling. Okay, and these are common questions that you and I, most of us have done that in the past. So I'll call upon Moin to take us through this activity that we've planned to get us all on the same page, and then we'll extend the session from there. So, Moin, are you around? Yes, you are. Over to you. Hey, hi Ritika. Thank you so much. Good afternoon, ladies. Hope you guys are having a great afternoon. So firstly, there's a very famous saying that there are no silly questions. Okay, there's nothing like a silly question. And let's be honest, on the internet, we've gone and we've searched for anything and everything. One moment you're searching for, uh, investment advice, and the next moment you're looking for how do I become a millionaire overnight. So we all have been there. We've done that. Sometimes we get the answers we are looking for. Sometimes we get distracted and end up shopping online. So today we are here. We have some questions for you guys. We'll throw them up in the comment section, and let's see. All you got to do is drop a yes or a no in the comment section if you have ever Googled. Okay, so here comes the first question. Should I stop my SIP in bear market? So let's see how many of you guys have Googled this particular question. A yes or a no in the comment section. Let's have a look at the comment section. Should I stop my SIP in a bear market? Okay, we get a couple of yes. Oh, there are some people who've said no. Very nice. So not surprised, but Google says that searches for this particular question has increased for up to 50% in the last 3 months. And obviously we all know why, because markets have shown us some really dark red colors in the last couple of months. All right, so good, very good for those who haven't really Googled this particular question. Those who have, stay tuned. Next question, how much do I need to retire? Drop a yes or a no in the comments if you have Googled this particular question in the past. How much do I need to retire?
Yes, there are a couple of yes. Okay, more yeses coming in. Interesting. Well, again, not surprised. I think this question, I think every person working a 9 to 6 job has Googled it on a Monday morning, the first thing. Okay, bhai, I am done. How much will I need? I just want to retire. All right. Jokes apart, moving on to the next interesting question. Is gold a good investment or should I look at mutual funds? Is gold a good investment or should I look at mutual funds? Tell us if you've Googled for this particular question in the past. Okay, again, a mix of yes and no. Very nice, interesting. Okay, a couple of more yeses. Well, you'll be surprised that year on year, there's been a 120% rise in searches on gold as an investment option. And we all know why, because we're all aware of the skyrocketing prices of gold and how gold has just gone doubled and tripled from its price where it was. We all really want to know when was actually the right time we could have actually entered the market of gold and picked up some gold there. But again, stay tuned, you're at the right place, you'll know a lot of answers. Up next, the next question is best investment options for women. Let's see how many of the women here have Googled this particular question. Best investment options for women. Let's see the comment section. Yes, somebody says obviously yes. Very nice. Okay. A couple of more yeses. Okay. So data says that 2 lakh plus searches are happening on this particular question. So, which is very nice, which only brings us to the fact that we do know that there are a lot of women actually wanting to invest, actually looking for investment avenues. So great going there. And surely, if you haven't found the right answers on Google, this session is going to get you the right answers. And one last question before we move to the actual session is, do I need life insurance if I'm not the primary breadwinner of my family? Okay, have you ever Googled this? Do I need life insurance if I'm not really the primary bread earner? Let's check the comment section. Okay, somebody says yes, a couple of more yeses. Okay, there are some who have some clarity, very nice. All right, so data again says that 1 lakh plus searches are happening to know, do I really need life insurance or a term plan? I wonder how many of us have actually got the right answers to the questions that you all asked Google. But guys and girls, the wait is over. You are at the right time and at the right place. Sit back and enjoy the session and make the most out of it. Over to Ritika to take the session forward. Thank you. Thank you so much, Moin. After listening to this and, after the interesting stats that you shared, it feels nice that people across, we all are asking, we are on the same track. We all want to know these answers to these questions. But before we get into, how do we get those correct answers, I think we'll have to take a step back and understand what is the right question that we need to ask. Okay, because there are times when we ask questions but those are incomplete, or you don't frame it correctly to, and because of that you might not get the right or correct answers. So I remember one such instant that had happened with me in the past when I'm pretty sure most of y'all would have also thought of this question, that where should I invest? All of us have that in our mind ki where should I invest, kahan pe invest karna hai. And I remember discussing this with Sailesh and he said this is incomplete, you're not asking the correct, or you're not asking the complete question. The complete question has to be, you'll have to understand what's your goal, what's the best way to invest for that, and what's your time horizon for that. So just by saying where should I invest, the answer that I'll get for me would be different vis-a-vis if you ask, vis-a-vis if Salish asks, vis-a-vis any other person, right? So that's how we'll have to understand what's the right way to ask these questions, right?
So in today's session, before we get into the questions that we will be addressing and we will get Sailesh to answer those, we have listed out those commonly, the way we say FAQs, that we have frequently asked questions. We will decode those, that, how can you ask the simple question in a better manner? Okay, so that you get the correct and the relevant answer. Okay, so moving to, inviting firstly Sailesh, our expert for today, who has been part of Blue Bindi program since inception, and he's been guiding and, he's been instrumental in guiding a lot of investors to reach their financial goals. So, hi, welcome, Sailesh. Hi, Ritika. Thanks to the Blue Bindi team for giving me this opportunity to again, share my experience, share my thoughts on investing. So we'll just present the So these are the common FAQs as I mentioned. So this is, I'm pretty sure, where should I invest is something. Am I audible? Yeah. Where should I invest? And I mentioned how Sailesh had actually guided me that, Ritika, this is an incomplete question that you are asking, right? So Sailesh, you want to just add on to this what I just shared? Yeah, Ritika. So, the first question is the most, frequently asked question. And so it's, many people don't know that investment should be linked to their goals. Okay, when I say goals, we can say that it is your child's education goal, child's marriage goal, your retirement goal, buying a car. And every session I have emphasized that when you link your investments to a goal, you get a clear roadmap. You know that you are, your choice of products or your choice of uh, you know uh, taking the most suitable product uh, uh, vastly improves. So if I just go and say that I want to buy a car in the next 1 year, and I today if I like I can go and buy an equity fund, okay, but that could be very risky. So if I say I want to buy a car in the next 5 years, then maybe an equity fund matters. It will find a place in my portfolio. But the moment I say I just want to invest, and somebody just hands me over a couple of equity funds, and I start investing, I could be making a wrong decision. So there are three things that you should keep in mind. One is the investment goal or your financial goal. Second is your investment horizon, and third is your risk profile. There is a fourth question. Very many advisors ask their clients, so is what is the expected return? But that can be little dicey because people can have expectations going beyond what is reasonable. So, somebody may come and say, I want 30% returns, which may not be possible always. Uh, so at least ask question with, which has got three answers. Yeah, I absolutely agree to that. And after you guiding me that way, I actually asked my question, and I have these, the goal for how long am I looking to invest. And obviously, even I want to say that I want a good percentage of return. But yes, I don't put that up, but yeah. The next one is, which is the best investment today? Which is the best investment option? I think this is also something which everybody asks. Again, Sailesh, what's your take on this one? So again, this is very popular and chalte firte we log, when I go for walk or if I'm in office or even, if I'm having a chat with any client, people will come and ask कि क्या करना चाहिए, कहाँ पे invest करना चाहिए, क्या लगता है best investment क्या है अभी का. So so there is nothing like a best investment. Okay, all investments are good, but it's like a medicine. No medicine is good or bad. It all depends upon what ailment you have and what is suitable for your particular diagnosis.
So same thing applies to investment. So when you again link it to an investment goal, your risk profile and investment tenure, then you will be able to uh, get the right product or the right avenue. So, for example, if I have to invest for my retirement, okay, and it is say 15 years away, then it is very clear that I can opt for a mix of equity and debt, or maybe some degree of gold. Okay, so I know my goal, I know my tenure, it's 15 years, and that is suitable for equity investment because equity always requires 3 to 5 years minimum to grow. And risk profile will define whether how much of equity, how much of debt, and how much of gold should be there in your portfolio. So again, these three inputs are very important to arrive at the right or the best investment, if at all you have to put it that way. I agree. Correct. Um, Sorry. Okay, again, is investing risky? Okay. So, yeah. So is investing risky? Of course. I mean, where I like to answer this, risk kahan nahi hai. Okay. Even when you're walking on the road, there is risk. So someone who is assuming that there is no risk in investing, he or she would be fooling himself. And I say, when you say risk, it is more about that you will have to go with the understanding that there is risk. The risk is always present. So all you need to do is to how do you mitigate that risk? How do you manage that risk? Uh, so let me take an example. Is equity investing risky? Everybody knows it is risky. Okay. You've seen that in the last, like Ritika mentioned, or I think Mohin mentioned that, we've been having a, uh, very bad market of the last 6 months. And we have seen deep red in the portfolios. So equity is risky. Okay. But is it not the case that many people have become rich and they have made a lot of money in the stock market? Of course, they have made a lot of money in the stock market. If you put your money into a bank, it is relatively less risky, but you'll have to always be sure that the bank where you're putting your money is a healthy bank. It's not a bank which is financially very bad. So even that risk exists. Today, we're all celebrating, gold. Gold is at 91,500 in rupees. Okay, it is $3,050 dollars. So is it risky? Of course, it is risky. There have been periods when gold has been quite flat. People have not made money in gold for 10 years at a stretch. So, so no investment is without risk. All you need to know is to how do you manage risk. Correct. Manage, and also how do you react to, um, such situations? Like, can you take that kind of a risk? Like the way you said, people bought gold, but for years, it was not growing or whatever. But were you okay? Now again, in equity, now we might just sit and think, oh shit, I should have maybe squared off my positions, or earlier when the markets were going up, people would have thought, why didn't I invest? But you don't know when what will happen, right? And what is your appetite, right? Because that will actually help you understand what kind of, what level of risk can you take. If you start feeling that jittery, then you are gone. So, it will be different. And as you rightly said, the medicine part will work for everybody in a different manner. It cannot be the same. Okay, next is, how much should I save? Is there a mantra? Is there a number? Is there a percentage that, that would guide us, that what is that amount that we should save? So, how much should you save? The maximum. Okay, that is the most simplest answer. But if I don't put a number to it, then it is still difficult for you to comprehend. So, there are thumb rules in investing, and one thumb rule which you need to remember in mind is that if you're earning 100 rupees, then you need to save 40 rupees. So the 40% is your saving rate. Now, this is a thumb rule. So this is to begin with. Now, somebody may have a saving rate of 30%, someone may have 50 and 60. How does this saving rate help? So, going by the past, history, it is said that if you have a saving rate of 40%, then your
likely to meet most of your goals in your life if you have a saving rate of 40%. That is the logic behind this 40%. Now, if you're saving 20-25%, which is generally the case, then you can do your math and you are likely to miss a few of your important goals. Okay. So again, you need to save considering what are your goals in life, and again, what is the inflation and what are your future needs, like it is mentioned. So your goals again become very important over here. Okay, so just modifying this bit, save and it'll be so you keep that 40% aside, but you then invest it somewhere to multiply it. So again, you will have you break that money, correct? So some would be as for your, emergency fund, and the other would be that is multiplying and it's growing your wealth, correct? Correct. So some money saving will go aside as a emergency fund. Some money will go aside for your house. For your maybe your child's education goal, something for your retirement goal. That will be channelized differently. Okay, understood. Okay, should I buy gold or real estate? Yeah, considering the way gold is moving, everybody wants to buy gold, and I'm sure a lot of women out there who bought gold out of their fondness for gold, or even out of Love for uh, jewelry. a love for jewelry, and अपने husband का झगड़ा वगैरह करके they may be laughing all the way to the bank now. Okay, so even in 2025, gold is the by far the best performing asset class. 2024 again, it was one of the best performing asset class, and since COVID, gold has done really well. Now, is gold a good bet in your portfolio? Definitely. We have always suggested you should have 10 to 15% allocation to gold in your portfolio. So if you have 100 rupees to invest, you can safely keep aside 15% into gold. The rest 85 rupees can get into equity and debt. Now, this process is known as asset allocation, meaning you put aside some money into each asset class. So asset class means something like an equity, debt, gold, real estate. Whether you should buy real estate, of course, you can buy real estate. There are two asset classes which can make money for you, a lot of money. If I have to say a multiply money. So one is equity and another is real estate, but both require skill set. But that doesn't mean that if you want a lot of money, you should not buy gold and maybe a bank deposit. Yes, they are also important. But yes, you will need all asset classes in your portfolio. You can't, it's like having a meal or having food. You can't only have fats. You can't only have carbohydrates. You need to have protein and fats and carbohydrates, everything in measured quantity. So need to have wholesome meal. Similarly, need to create wholesome portfolio. Okay, moving to the next one. How can I start investing? Again, this is also something commonly everybody would ask, but I'm pretty sure the journey or where one starts would be different for each of us. So yeah, Sailesh. So how can I start investing and saving is basically, this is a very often asked question. And most people struggle with saving. That's the first part of it. Before even you invest, you need to have that capital to invest. Okay. And most people struggle with saving. So I say that you need to have good money habits so that you are able to save, and then you are having a good investment habit so that you invest regularly. Okay. That is the best part of the whole process. So first thing is to get your savings right. Like I said, you need to have 40% saving. Now, a lot of people come back and say, I have only done 20%. Is it too late? How do I improve this? Yes, you know that you're saving 25%. You know that you need to save at least 40%. That is, so how do you do that? You need to develop good money habits.
And in the last session, I think we discussed about a lot of money habits. Okay. So that is where everything is linked. Yes, all should develop money habits. So we start that with deleting the apps. That's the first thing that happens. Sorry. What happened? Okay, in Hindi. Okay. Okay, sorry. We got a request कि थोड़ा हिंदी में भी बात की जाए. तो we will try बीच बीच में हम जैसे भी हिंदी में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और मूविंग फॉरवर्ड मूविंग आगे अभी ऐसा होने वाला है मेरे साथ सॉरी आई थिंक वी ऑन द लास्ट क्वेश्चन सो ये भी रहेगा कि हाउ डू आई प्लान माय चाइल्ड्स फ्यूचर ओके बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट यू हैव टू मतलब फ्यूचर इज वन थिंग एंड पैदा होने से लेके पालने तक सब कुछ देयर इज समथिंग और द अदर दैट जस्ट कीप्स हैपनिंग एंड देन ऑब्वियसली आजकल तो सबको पता है एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट इज the fees and everything that the institutes charge is way, way, way expensive than what I am assuming all of us did when we were kids. So, Salish, what do you think? How should one, and what is the right question? Yes, and then I mean, the way you're answering, in a way, you're giving the audience to understand what's the better way to question this, and also in a way, you're giving them the sahi solution answers also to it. Right. So, I'll answer this in Hindi. जब हम बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना है तो भविष्य तो बहुत बड़ा होता है. जैसे रितिका ने बोला कि जैसे जैसे बर्थ होता है तो उसको अगले 25-30 साल तक हमको नर्चर करके ग्रो करना है. तो उसमें बहुत सारे गोल्स होते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल कि स्कूल की डोनेशन है, फिर स्कूल के खर्चे हैं, फिर उसके बाद कॉलेज के खर्चे हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, शादी है. तो ये सारे माइलस्टोन हो जाते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर में. ठीक है. सो हर एक माइलस्टोन को हम एक फाइनेंशियल गोल के तौर पर ले सकते हैं और उसको हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं. तो अगर मेरे को कॉलेज एजुकेशन के लिए प्लान करना है, सपोज माय चाइल्ड इज 5 years old एंड आई नो दैट he or she will go for college at the age of 15 or 16, then I have got 10-11 years to plan for that goal. तो वो 10-11 साल के लिए मुझे एक अलग से समझो SIP करनी है म्यूचुअल फंड में, तो वो अलग से होगा. अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में भेजना है, उसको MBA कराना है, डॉक्टरी करानी है, इंजीनियर बनाना है, तो उसका जो फीस है अभी और इन्फ्लेशन को फैक्टर करके हमको ये देखना पड़ेगा कि उसको कितनी रकम लगेगी एजुकेशन में, और उसके हिसाब से मुझे एक फंड बनाना पड़ेगा एजुकेशन का जो मेरे कॉलेज एजुकेशन फंड से डिफरेंट होगा, वो अलग होगा, और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फंड है वो अलग होगा. और इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि उसकी आपको शादी भी करानी है और आपको उसके लिए भी खर्चा करना है तो उसका एक फंड अलग बनेगा. हालांकि आजकल लोग ये बोलते हैं कि बच्चा पढ़ लिख ले तो वो इतना काफी है, शादी वो खुद से जाके कर सकता है. So a lot of people come back and also say that, but that is the reality. So the point I'm trying to make is कि for every goal you need a separate portfolio, though operationally you may find it little difficult, but with the help of technology this is quite possible these days. But all you need to know is that when you're planning for your child's future, you need to have that future, you need to break it into different milestones. What will happen at what age, and you will have to plan accordingly for each of that milestone. आई थिंक दिस इज एकदम मतलब एप्ट है. वो एक माइलस्टोन अगर ध्यान में हो तो पता है अभी इसके लिए क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट क्या, तो अकॉर्डिंगली आप वैसे ही प्लान करते रहो. और ऑब्वियसली जैसे आप हमेशा बोलते हो कि इसका मतलब ये नहीं है एक बार एक माइलस्टोन कर दिया उसमें जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, गो बैक, उसको एक बार देखो भी कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है. एंड रेगुलर चेकअप्स हम बोलते रहते हैं ना, करना चाहिए, वैसे भी वो करते रहे तो इट रियली वर्क्स. सो आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन ही था. सो जो हमने समझा था दैट दीज आर द कॉमन वंस, जो अगर सही से पूछे जाए तो आई एम प्रीटी श्योर हमें सही जवाब मिलेगा, एक सही डायरेक्शन में हमें जवाब मिलेगा. बिकॉज अभी बहुत ऊपर ऊपर से हो जाता है कि कितना इन्वेस्ट करना है, क्या है, सबके लिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, बट उसके आगे पीछे भी उसके आगे पीछे की चीजें भी समझनी पड़ेंगी, तभी हमें सही आंसर और सही फाइनेंशियल गाइडेंस मिलेगा.
सो शैलेश, हमने जब हम ये सेशन की प्लानिंग कर रहे थे तो हमने ये Q&A हमारी ऑडियंस से पहले ही बोला था, दे कैन सेंड अस स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट दे हैव। तो ये वाले जो अभी तक हमारे थे, ये तो हम डिकोड कर रहे थे कि ये क्वेश्चंस को आप कैसे बेहतर पूछ सकते हो सो दैट यू गेट द राइट आंसर। बट ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमें ऑडियंस से मिले हैं रेलेवेंट टू देयर प्रोफाइल। सो एक एक करके आई विल जस्ट put it across to you and then you can give your valuable insights on that. So the first one is, how do I start investing with just 2000 rupees per month? So it is simple. You can start with. So again, I am assuming you have the goal is not mentioned over here. So if I know the goal, then I can really tell you how the 2000 rupees can be invested. So assuming you want to invest it for your child's education and that goal is 5-10 years away, then this 2000 rupees to start with, you can put it into, say, a equity mutual fund. Okay, and you start an SIP. How long should the SIP run? Till the goal is met. तो अगर गोल 10 साल दूर है तो आप 10 साल के लिए SIP करें। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने फंड A और B सिलेक्ट किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 1000 एक फंड में डाल सकते हैं और 1000 B फंड में डाल सकते हैं। और आप जब SIP स्टार्ट करें तो आपको स्टार्ट एंड डेट पूछा जाएगा, तो आप बेशक चाहिए तो 10 साल की अवधि चुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि 2025 में आपने स्टार्ट किया, आप 2035 तक आप उसका एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे अभी रितिका ने बताया कि जैसे आपका एक साल पूरा हुआ तो आपको एक बार अपना पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फंड का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं हो। तो आपको अगर कोई करेक्टिव मेजर लेना है, अगर आपको कोई फंड में से एग्जिट करना है, ठीक है, तो आप SIP को बंद करके बीच में से निकल भी सकते हो। तो ये एक तरीका है, आप अपने 2000 रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका फंड सही तरीके से चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करते रहिए, और अगर वही फंड अगर 10 साल तक अच्छा चल रहा है तो कंटिन्यू करते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे जैसे दिन और साल गुजरते जाएंगे, आपका SIP का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो आप अगर आप 2000 से स्टार्ट करें तो उसको फिर 3000, 4000, 5000 तक आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल क्या है और कितना आप अक्यूमुलेट करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ दैट 10 years. So I think ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, I'm hoping कि वो आज सेशन में है और उनको पता चल गया ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, जो अभी तो आपने एक अज्यूम करके बताया कि ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए होगा। पर जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से या जानना चाहते हो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो जो शैलेश ने पहले बताया कि वो जो गोल है जिसके लिए आप कर रहे हो और क्या आपका टेन्योर है, कब तक आपको ये करना है, वो अगर साथ में चीजें ऐड करेंगे तो आई एम श्योर आपको बेटर एडवाइस और बेटर सोल्यूशन मिलेगा। Okay, moving forward. So next question is, what's the best way to save for retirement if I've started late? ओके, ये भी एक तरीके से इनकम्प्लीट है, क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेट? ओके, नाउ वी से दैट ideally, and but I'm again emphasizing on the word ideally, a person should start planning for retirement the moment he starts working. Okay, तो बिकॉज जिस दिन से आपने नौकरी करना शुरू किया उस दिन से आपका रिटायरमेंट गोल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लेट बोल रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 40 के हो और आपने 50-55 साल तक रिटायरमेंट लेने का सोच रखा है। अगर आपने 60 का भी सोचा है तो द फैक्ट इज दैट यू आर एक्चुअली लेट। ओके, सो 40 to 60, 20 years, it is still a good time. You can recover, whatever time is lost. लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप 25-30 साल की उम्र में स्टार्ट करते तो हो सकता था कि आप by now in the next 15 years you would have accumulated a sizable amount. But if you're really starting from scratch at age, say assuming at age of 40, then you have 20 years and you will have to really work backward and see how much you need to start investing for your retirement. So retirement is my favorite topic, and I'll request Ritika to have one session in the future
So it will be an eye-opener session for a lot of you. I'm sure a lot of my young colleagues around also will agree after they have gone to that session. श्योर वो एक वो हम रेडी रखेंगे, वो सेशन करेंगे ना, तो सबको ऐसे वो हार्ट अटैक या कुछ, ओ शिट अभी तो मैंने प्लानिंग की नहीं, अब मेरा क्या होगा, मैं व्हेन विल आई रिटायर. तो वील कीप ऑल दीज थिंग्स रेडी एट आवर डिस्पोजल जस्ट टू टेक केयर ऑफ पीपल. सो अगेन आई एम प्रीटी श्योर जिसने भी ये पूछा है एंड बाकी सबके लिए भी, एटलीस्ट फॉर अस आल्सो, अभी जो भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे, वन ऑफ द रीजंस जो हमने पहले वो बताए थे ताकि लोगों को समझे कि क्वेश्चन में थोड़ा और डेप्थ डालना है, नॉट दैट कि एक्सपेक्ट करिए कि आंसर्स ही लंबे लंबे हो. नहीं, अगर क्वेश्चन सही होगा, कंप्लीट होगा, तो यू विल श्योरली गेट अ बेटर आंसर. नाउ अगेन द नेक्स्ट वन, शुड आई फोकस ऑन गोल्ड और म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ? So again, like I said, gold is a must in a portfolio. Okay, it is required. So 10 to 15% allocation आप गोल्ड में रख सकते हैं, और इक्विटी में जैसे आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है. तो अगर आप मेरे को पूछो कि आपको इक्विटी फंड में डालना है कि डेट फंड में डालना है, दैट इज द राइट वे. सो लॉट ऑफ पीपल से शुड आई इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड? यस, बट म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के आते हैं. ठीक है, तो आपको इक्विटी में डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए अगर रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको आपकी पैसा मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है एट अ फास्टर रेट, ओके, then you will have to take the equity route, and it is required and you cannot avoid. Like I said, you can't avoid risk, but you have to basically mitigate risk. You have to plan your portfolio. So both are required in the portfolio. Both are needed. Okay, next one is, how do I build an emergency fund while also investing? तो invest तो करते रहना है, but simultaneously एक emergency fund का pool भी बनाना है, तो उसके लिए what do you think, Sailesh? How should one go about? So the point is that emergency fund कितना बड़ा होना चाहिए पहला तो. So lot of people ask this, and there are again thumb rules for this. Lot of advisors tell you to create an emergency fund that can take care of your next 6 months expenses. Some are conservative and they say आपको 12 महीने के एक्सपेंसेस आपके बैंक में होने चाहिए. मतलब अगर आपका एक्सपेंस समझो 25,000 रुपया है हर महीने, तो आपका 3 लाख रुपए बैंक में होना चाहिए. 25,000 into 12 is the bank balance you should carry always, and you should not touch that. You should assume that money doesn't exist. Okay, some people are little more less conservative, and they think that 6 महीने से काम हो जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए तक अगर बैंक में है, then I will not touch that money. Okay, now what is the logic of having an emergency fund? Emergency fund, as the name suggests, is something that you need money in urgent, and you may need it on a holiday, you may need it in the middle of night. So obviously it has to be very liquid. So how do you create that liquidity? Either you take out that money from an ATM. Today luckily you have UPI, you have so it is easy. But UPI से पैसा अगर आपको करना है तो mostly you'll need a bank account. Okay, lot of places you can also use your credit card, but debit आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए ताकि UPI भी काम करे. तो इसका लॉजिक ये भी है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आप टेम्पररीली घर पे हैं, आप ऑफिस नहीं अटेंड कर सकते हैं, या आप विदाउट पे हो, जैसे अभी कोविड में हुआ था, लॉट ऑफ पीपल वर विदाउट पे, और पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स टिल द टाइम दे फाइंड देयर न्यू जॉब और दे आर बैक ऑन देयर फीट अगेन, देन दे शुड हैव money to take care of those interim expenditure. Okay, so this is the meaning of a contingency fund, and the larger the pie, larger the fund, the better it is. That is why I said कि 6 months भी ले सकते हो और 12 महीने ले सकते हो. It should not be too much of a stretch, but if you are planning your finances, you should also ensure that you have a contingency fund in place. Okay. Okay. Now the next one is, what's the best investment option for homemaker with limited income? Okay. So like I said, the best investment option ऐसा कुछ होता नहीं है. You as a homemaker also need to understand that why do you need that money. Now it is quite possible that you have not thought about it.
ओके, आपने इतना नहीं सोचा होगा कि मुझे ये अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए या मुझे अपने बच्चे की शादी के लिए चाहिए, या तो अज्यूमिंग यू जस्ट वांट दैट मनी एज अ आपको एक पैसा है और आपको 4-5 साल के लिए नहीं चाहिए, एक बार अज्यूम कर लेते हैं, तो आप इसको जाके, और मैं अज्यूम करता हूँ आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो आप इस पैसे को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो that will be the best investment option. I think mutual fund is the best investment product. It gives you the option to invest regularly through SIP, systematic investment plan, and there are a lot of good websites available where you can read about mutual funds. You can Google and you can listen to a lot of podcasts, Blue Bindi type of sessions where you can really take a good investment decision. And of course, if you have an investment advisor, you can also seek help from them. But this is the most simplest form of investment. You can start an SIP from your mobile phone. So most brokers, distributors will have their mobile apps. You just need to ensure that you have adequate savings and you are able to start your investing. That is the most important point. Okay, while we are taking these questions that we already have, audience में अगर कुछ भी और questions है तो आप chat पे डालते रहिए. We have a Q&A session for the live audience. We'll take it up there, but at least people can start posting it. ओके ये मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने आई थिंक आपसे पूछा भी था या काफी लोग पूछते रहते होंगे आपसे, जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती है तो शुड आई स्टॉप और पॉज माय एसआईपी इन दिस एग्जिस्टिंग मार्केट? तो देखो, ये एक बहुत बढ़िया हैबिट है, तो इसको स्टॉप करना तो सबसे इजी है। आपको जाके खाली कुछ करना नहीं है, लॉग इन करना है अपने ऐप में और जाके पॉज बटन दबाना है। लेकिन वो पॉज में रिज्यूम करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो आपको जो सेविंग्स है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। अगर आपने एसआईपी की आदत स्टार्ट कर ली है तो आपको पॉज नहीं करना चाहिए। देखो, मार्केट जो है ना, बुल और बेयर हम बात करते हैं या ऊपर नीचे तो होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर अगर आपका गोल 3 साल 4 साल 5 साल दूर है या उससे भी ज्यादा दूर है, आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, ठीक है। और you should be in touch with your advisor or someone who is able to guide you, okay, very well in this matter. हाँ, आपको ये देखना है कि आपका जो फंड है जहाँ पे भी आप एसआईपी कर रहे हो उसकी सेहत ठीक है कि नहीं, वो फंड की हेल्थ बराबर है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन बाय ऑल मीन्स स्टॉप द एसआईपी इन दैट फंड एंड स्टार्ट इन अनदर, बट डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ वॉलेटिलिटी, ये तो होने वाला ही है, ठीक है। सो एसआईपी आपको तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक आपका गोल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो तब तक लास्ट मंथ तक आपको वो इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। दैट इज द वे यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। अच्छा, दूसरा ना एक पॉइंट मुझे यहाँ पे याद आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, देयर आर 2 रिग्रेट्स। हमको हमेशा एक दो चीजों का दुख होता है, गम हो जाता है हमको, कि देयर इज नोन एज रिग्रेट ऑफ कमीशन एंड रिग्रेट ऑफ ओमिशन, ठीक है ना। अगर मार्केट बढ़ गया, यहाँ से समझो कल से मार्केट बहुत ऊपर बढ़ गया, तो बोलेंगे अरे यार मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैंने बेकार में एसआईपी बंद कर दी। ओके, तो ये आपने मिस्टेक कर दी और ये मिस्टेक कमिट हो गई, तो मिस्टेक ऑफ कमीशन है, रिग्रेट, ठीक है ना अपने। और अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया और मार्केट नीचे चला गया तो भी आपको रिग्रेट होगा, ओ माय गॉड, आई शुड हैव booked my profit. So there is always a regret that will come with you, and this is part of life. Don't have to worry about it. Okay, so please take it in stride, or you don't have to. अच्छा, दूसरा ये है कि आजू बाजू जो लोग कर रहे हैं ना उसको मत देखिए। लिसन टू योर एडवाइजर एंड लिसन टू योर कॉन्शियंस। आपके दिल की आवाज क्या बोलती है, ठीक है। और ब्लू बिंदी सेशन अटेंड करते रहिए, तो वी विल कीप यू गाइडिंग यू। ट्रू, एकदम सही। सो ये बहुत टेम्पटिंग होता है आजकल कि these EMI schemes, zero EMI schemes. So somebody is asking, are these zero EMI schemes good? तो देखो, ये है कि जीरो ईएमआई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्कीम जो है ना, वो नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनीथिंग फॉर फ्री। तो आप कुछ भी ले रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो मैथ्स होगा।
So you have to really study the zero EMI scheme in deep. जब भी आप कहीं पे भी जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने जाते हो, अप्लायंस खरीदने जाते हो, आप सोचते हो या आपको क्रेडिट कार्ड के बिल में आता है कि कन्वर्ट दिस इनटू 6 easy EMIs. Okay, you have to study the rules, rules या उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो क्या कहना चाह रहा है. बिकॉज अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड. ओके, कहीं ना कहीं कुछ तो हिडन कॉस्ट होगा. तो अप्रोच विद दैट इन माइंड. एंड वन मोर थिंग इज दैट इट इज अ वेरी ये EMI जो है ना आपकी सेविंग हैबिट को बहुत खराब करता है, जल्दी खराब करता है. बिकॉज इट इज इजी टू स्पेंड बट इट इज डिफिकल्ट टू सेव. ठीक है ना, आपने एक EMI स्टार्ट किया, आपको लगता है चलो अब तो बैंक में पैसा है, अगला EMI बोनस से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, तो आप दूसरा कोई खरीद लेंगे, फिर वो इस पे EMI शुरू कर देंगे. तो आप ऐसे करते 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 यू विल बिकम टू स्ट्रेच्ड इन योर बजट एंड वन डे यू विल फॉल इन अ डेट ट्रैप. ठीक है ना, तो EMI से मेरे ख्याल से आपको दूर रहना चाहिए. Okay. So this is again a very common one. A lot of times I think people have asked in stocks versus mutual funds, which is better? Direct equity या फिर going the mutual fund route? तो दोनों रूट अच्छे हैं, ऐसे नहीं है. ठीक है, लेकिन आपको देखो हर चीज का एक रूल रेगुलेशन होता है. आपको एक आपको स्किल सेट होनी चाहिए टू. तो अगर आपको इक्विटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, तो यू शुड नो which kind of stocks to pick up. So you should be able to understand the company, what is the company's business, what is the risk to the company, who are the competitors, will the company do well in the future, कहीं कुछ टेक्नोलॉजी उसको ऑब्सोलीट तो नहीं कर देगी. तो you have to be very careful of which stock you're picking up. For example, I'll give you one अभी recent example है. एशियन पेंट, हमने सबने सुना है एशियन पेंट के बारे में. ठीक है ना, 60% market share. I could be wrong, but something around 60%. So it's the largest paint company in India, the oldest paint company in India. It's made a lot of wealth for investors. But we have a new player now in the market, which is Birla. Okay, now Birla is equally capable of capturing market share, and it will be a competition to Asian Paint. Now, whether you should buy Asian Paint at this price or not, you will have to be very sure. Unless you know what the management is thinking, what is the future, you could be picking up a wrong stock which has got a good history, but it may not be a good pick for the future. Now, and I'll add a disclaimer that this is just for illustration. I'm using this. Don't take it as a recommendation to buy or sell, but just to prove a point कि stocks can be very tricky. इसलिए हम बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में आइए जहां पर आपके पास अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो you borrow that expertise, you give it to a fund manager and his team who will manage the portfolio for you. Okay, obviously they will charge you a fee that's known as the expense ratio of the fund, but it is good. You don't have to worry about the market up and down, कौन सी कंपनी क्या कर रही है वगैरह वगैरह. जो एसोसिएटेड उसके साथ जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी वो आपको सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है. आप बेफिक्र होके खाली सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकी का आप फंड मैनेजर पे छोड़ सकते हैं. Again, this depends. जितना स्टडी खुद से कर सकते हैं, पता है स्टॉक्स है, वरना म्यूचुअल फंड तो सही है. So next one is alternatives to FDs for better returns. So FDs अगर मैं अज्यूम करता हूँ बैंक FDs यहाँ पे, तो there is something known as corporate FDs. So corporate FDs का कुछ सारे कॉर्पोरेट्स को अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो भी फिक्स डिपॉजिट इशू करते हैं. तो आप कॉर्पोरेट FDs दे सकते हैं. बैंक्स के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट्स आर कंसिडर्ड मोर रिस्की. ओके, सो क्योंकि उनका वो बिजनेस होता है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, तो कॉर्पोरेट्स आर कंसिडर्ड मोर रिस्की देन अ बैंक. तो दे विल पे यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके अलावा आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं जैसे, तो NCD बोलते हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके NCDs के इश्यूज आते रहते हैं. अब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में डाल सकते हैं, उसमें भी आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है बैंक से. कई सारे बॉन्ड्स होते हैं जो नॉर्मली बॉन्ड्स जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती हैं
वो इशू करते हैं। जैसे REC का बॉन्ड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका बॉन्ड आता है। तो वो अवेलेबल है नहीं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके बॉन्ड्स आते हैं, प्राइवेट कंपनीज के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन उनकी जो रिस्क है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें वो रिस्क जो है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, होता है। लेकिन ऑब्वियसली आप रिस्क ले रहे हो तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, गोल्ड पे हम ऑलरेडी इतनी बात कर चुके हैं, बट फिर एक क्वेश्चन है कि अभी करंट प्राइसेस में व्हाट डू यू थिंक, इज गोल्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? जैसे मैंने कहा कि हर पोर्टफोलियो में 10 से 15% का गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास आज भी पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल आप गोल्ड खरीदिए। ये मत समझिए कि यहाँ से 91,500 पे मैंने लिया और कल वो 85,000 हो जाएगा तो क्या। ठीक है, ऐसा हो सकता है, हुआ भी है पास्ट में। लेकिन आप हर वक्त लेते रहिए। गोल्ड इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी। ओके, इट्स लाइक अ इंश्योरेंस इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, नॉर्मली हम इंडिया में बोलते हैं जो गोल्ड है हमारा लास्ट सेवियर है। ठीक है ना, हमने बहुत बार मूवीज में देखा है कि जब एकदम परिस्थिति एकदम खराब हो जाती है तब हम जाके गोल्ड को बेचते हैं। ठीक है, सो आई प्रे यू नो none of this situation arises for anyone, but gold should not be used as a means of multiplying your money. It is a hedge in your portfolio, it's an insurance in your portfolio, and use it as that कि कहीं आपका 10-15% of the portfolio is absolutely safe, and gold is considered to be it's the most precious metal। ठीक है ना, उसकी वैल्यू कभी घटती नहीं है, बढ़ती जाती है, वो शॉर्ट सप्लाई में है। ठीक है, लेकिन क्या 91,500 से गोल्ड नीचे आ सकता है? बिल्कुल गोल्ड नीचे आ सकता है। ठीक है ना, बट हमेशा आप उसमें गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। आई डोंट नो, अभी लास्ट क्या सबने सुना, कुछ Yeah, टेक्निकल इशू हो गया yes. था, बट गोल्ड के बारे में हमने बात की कि एक सिक्योरिटी नेट होता है अगर गोल्ड है अपने इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था शैलेश, वो था प्लानिंग फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। नाउ अगेन, ये आपने पहले भी बोला, आई थिंक एक और बार, यू नो, इफ यू कैन डिटेल इट आउट, इट्स नॉट जस्ट द fees, it's going to be a lot more that one has to be prepared for. तो just उसको कैसे करना है, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप बताइए। तो नॉर्मली ये होता है कि लोग बता देते हैं कि अगर मैंने पूछ लिया कि आपको किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना है, तो किसी ने बोला कि मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए करना है, तो समझो उसने डिटेल भी कर दिया कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना है, समझो। तो ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या है, अगर MBA करना है तो मैं, अगर मैं बोलूँ कि IIM में जाके MBA करना है, 25 लाख रुपए लगेंगे। तो ये
Sorry, we are back again. Again, Salish. तो आई वाज सेइंग कि जब आप किसी एजुकेशन के बारे में प्लान करते हैं तो उसमें खाली आपको ये नहीं देखना है कि ट्यूशन फी का जो है या कोचिंग जो आपकी जो इंस्टीट्यूट की फी है उसके लिए खाली प्लान नहीं करना है, उसके साथ जो जुड़े हुए खर्चे हैं उसके बारे में भी आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप बच्चों के लिए उनका समझो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान कर रहे हैं तो ट्यूशन फी जो है या इंस्टीट्यूशन की जो फी है, उसके अलावा अगर वो हॉस्टल में रहने वाले तो हॉस्टल का खर्चा, अगर 2 साल का वो कोर्स है हॉस्टल में रहेंगे तो उनका 2 साल का हॉस्टल का खर्चा हो गया, उसका खाना पीना हो गया, उसके बुक्स हो गए, अगर उसको लैपटॉप लेना है वगैरह वो खर्चा हो गया। फिर वो छुट्टियों में आएंगे जाएंगे उसका जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर वो होगा, कॉन्वोकेशन का एक्सपेंडिचर। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अराइव एट द राइट बजट। If I only say I want to plan and I say that today the expenditure for an IIM is around 20 lakh rupees for 2 years, that will be a not a complete exercise. मैं खाली 20 लाख का फैक्टर करूंगा और उसके साथ समझो मुझे और 5 लाख का खर्चा और एक्स्ट्रा होगा 2 साल के लिए, तो मुझे 25 लाख का बजट प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत कुछ करना है। अभी एक काम करता है, मतलब मेरे पास जो मेरे क्वेश्चंस थे मेरे हो चुके हैं, जो हमें प्री सेशन हमें हमारी ऑडियंस से मिले थे। अभी मैंने बोला था पहले भी, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। आप लोग के अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, प्लीज पुट दैट ऑन द चैट। वी विल टेक दिस one by one and I'll read out the questions to Salish and then we'll get him to answer the same. So just put in the details in the chat box. So okay, I have 2 questions so far. So Salish, which fund is good for child's future for 10 years? I mean, that's what the person has only mentioned. So I will not be able to specify any fund name for various reasons. Okay. But like I said, when you're saying for future, I'm assuming if it is 5-10 years, then you can pick up 3 or 4 good mutual funds, good equity funds rather, and you can start investing. But I will not be able to specify any fund on this platform. Okay. We have one more question. At the age of 58, which fund is, for this age that you would recommend for next 5 years, 10 years, which sort of has a regular monthly income? तो अगर आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको कोई एनसीडी चूज करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको मंथली चाहिए, एश्योर्ड चाहिए, तो एनसीडीज में और कॉर्पोरेट एफडीज में ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप कोई भी मतलब अपने एडवाइजर की सलाह से अगर आप कोई कॉर्पोरेट एफडी भी चुन लें और कोई एनसीडी चुन लें तो वो आपका पर्पस सॉल्व कर सकता है। नाउ important point over here is that when you select any corporate FD or an NCD, you have to study the institution or the company that is issuing that NCD or a corporate FD, because उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फ्यूचर उन्होंने पास्ट में इंटरेस्ट सही टाइम पे पे किया है कि नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल सही वक्त पे लौटाया है कि नहीं लौटाया, ये आपको चेक करना पड़ेगा ताकि आपको एश्योरेंस रहे कि आप सही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। ओके, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने? सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने? तो म्यूचुअल फंड मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूँ। तो पहले तो म्यूचुअल फंड चुने जो आपके गोल से मैच करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात हुई कौन सी इक्विटी फंड। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जिसका रिटर्न है 1 साल का वो फंड जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया तो उसमें नीचे एक डिस्क्लेमर होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है,
तो पास्ट में मत देखिए, ठीक है। अगर आपने एक फंड लिया है जिसका 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड है और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको एक एश्योरेंस हो जाता है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। तो आप वैसे टाइप का एक फंड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आपको कोई भी फंड आप सिलेक्ट करें तो एटलीस्ट देखिए कि उसके 3 साल हो चुके हैं और वो कौन से फंड हाउस से है, वो एएमसी कौन सी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है मार्केट में, उसके फंड मैनेजर कौन है। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स पे, या तो आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेशन जो है म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको एबीसी समझो म्यूचुअल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में पूरा परफॉर्मेंस, उसका रिस्क पैरामीटर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। नाउ इफ यू आर कंप्लीटली न्यू देन यू आई वुड सजेस्ट कि यू टेक हेल्प फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ओके। if so you sit with your investment advisor and ask questions, okay. Let him provide you with written information on that. So I always say that before you buy, ask why, okay. अगर आपको कोई आके बोलता है कि ये फंड में इन्वेस्ट भी करो तो क्वेश्चन पूछो जितने क्वेश्चन पूछना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले, लेटर ऑन दे शुड बी नो रिग्रेट्स कि अरे गलत चुन लिया, ये कर लिया। So that is how it should be. Which is fair, and I think आज के सेशन के बाद क्वेश्चन सही तरीके से और कंप्लीट क्वेश्चन पूछना भी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अभी जैसे आपने शैलेश बोला कि पहले पूछो, बाद में नहीं हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो सब नहीं। तो पहले जितना यू कैन बी केयरफुल, एंड जितना भी, और कोई भी क्वेश्चन बड़ा या छोटा या सिली नहीं होता है, नहीं पता है पूछो, आंसर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक टू टेक द राइट डिसीजन। ओके, म्यूचुअल फंड कौन सा वो हो गया था, विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, okay, which investment option should one go for if they are thinking of investing in e-gold, gold mutual fund या gold stocks? कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए शैलेश? So गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हो या गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, दोनों ही अवेलेबल हैं, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है कि आपको उसके लिए एक डीमैट अकाउंट लगेगा और आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। तो आप जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो वैसे आप स्टॉक मार्केट से ही गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हो, ठीक है। गोल्ड म्यूचुअल फंड का क्या है, आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके आप सीधे से गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, लेकिन गोल्ड ईटीएफ आपको स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो लोग गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, तो आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड से भी अच्छा म्यूचुअल फंड का गोल्ड ईटीएफ है, बिकॉज उसमें जो प्योरिटी ऑफ द गोल्ड होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। सेकेंड इज व्हेन यू बाय फिजिकल गोल्ड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, सेफ कीपिंग, उसका आपको टेंशन रहेगा। गोल्ड ईटीएफ में आप गोल्ड ही बाय कर रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग गोल्ड होता है वो म्यूचुअल फंड के सेफ कस्टडी में होता है, तो आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है। वो तो सही है शैलेश, बट फॉर फीमेल्स गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड अगर वो फिजिकल नहीं होता तो शिट, वैसे लगता है गोल्ड कहाँ है। बट आई स्टिल एग्री विद यू कि आई पर्सनली हैव इन्वेस्टेड in digital gold, but I know my mom and my cousins and people around me वो अभी भी रहता है कि physical gold खरीदते हैं। तो I think इसके लिए काफी awareness अभी भी कम है। Next one is what are those common mistakes, Sailesh, that you feel as a new investor one should avoid? Yeah, one can just be aware of, वो mistakes ना करे ताकि उनकी आगे की journey सही रहे। So few mistakes, again we can do a session on this, but like I said, if you are not investing in line with your goals, that's the biggest mistake you can do. If अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, then your investment may not be taking the right direction. That is one part of it. Second is you are investing keeping in mind the past record, the recent history, ठीक है। तो do what is good for you rather than what is happening in the market. जैसे
2 साल पहले बहुत तेजी थी तो लोगों ने बहुत ऊंचे भाव में शेयर्स खरीदे और इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो वो रिसेंसी फैक्टर जो होता है उसको मत देखिए, या अगर आप जैसे मैंने बोला म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो आप पास्ट 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है, तो वो गलत है। सिमिलरली इफ द मार्केट अभी जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, अभी अभी हो सकता है टाइम हो टू इन्वेस्ट, ठीक है, बट पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग एट दिस स्टेज, so don't go by what is happening in the recent. Second is don't only put all your eggs in one basket. Divide your money among different asset classes. We call that as asset allocation. So equity, debt, gold, real estate, सब जगह पैसा लगाना चाहिए, because every asset class has a different risk profile and a return profile. ठीक है, इक्विटी में आपका पैसा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा है। बैंक फिक्स डिपॉजिट बहुत सेफ होता है, एक रेगुलर अश्योर्ड इनकम आती है आपको, लेकिन वो ग्रो नहीं हो सकता पैसा उसमें। तो ऑल हैव देयर रोल टू प्ले इन द पोर्टफोलियो, सो यू हैव टू मेक अ जुडिशियस मिक्स। So this is one mistake. Third, an important mistake people do is that they don't review their portfolios. आपने पैसा लगा दिया लेकिन आपने उसको ट्रैक ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लेके भूल जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं अरे मेरा तो परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ या वगैरह बहुत कुछ। तो कभी कभी और कुछ लोग इसका ऑपोजिट भी करते हैं, वो दिन रात पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, तो उससे भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे मार्केट में पैसा ही नहीं बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम अवॉइड कीजिए। रेगुलरली सिट विद योर एडवाइजर। आजकल तो पोर्टफोलियो ट्रैकर इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल and it is available on your computers to log in and check your portfolio once every quarter, once in 6 months, so that you know that your schemes are doing well, your stocks are doing well. Okay. If you have an advisor, good advisor, please connect with them. Okay. So take their help. Don't shy away from taking professional assistance. I know a lot of people say नहीं मुझे trust नहीं है वगैरह नहीं है, but trust me ऐसा नहीं होता है, आपको प्रोफेशनल एडवाइजर की भी हेल्प लगेगी। So these are some of the mistakes. There are many more, but these are some important things that you should keep in mind when you're investing. Okay, now that you already spoke of that gold ETF, the person is asking which one would you recommend, which is performing really well, and should she invest there? So I will not be able to take any Mhm. specific name. We are not, from compliance point of view, allowed to specify any stock, mutual fund. So because one thing that we need to know is know your customer. So the person who is asking, I don't know the profile. So it will be not right on my part to specify any investment, but I can, like I said, I can give you a product category and where you should invest. Which one? You will have to really get in touch with one of the wealth managers. Or you can connect with Sailesh offline and you can treat him or make him your advisor, financial, the way he does, he's done, he's helped a lot of investors. So you can reach out to him and yeah, you can get the name there. Okay, the next one is 10% debt okay, which is, is it okay for me to have 10% debt in my portfolio? Is it okay to have 10% debt? Okay, by debt meaning you are saying fixed income or loan. Because debt has two connotations. So I'll answer it both ways. Okay. Okay. So if you have a loan, okay, I'll give you the thumb rule for that. अगर आपके पास लोन है और आप EMI पर पे कर रहे हैं, तो आपका EMI should not be more than 30% of your income. तो अगर आपकी 100 रुपए की इनकम है, तो आप 30 रुपए से ज्यादा EMI मत पे कीजिए, ठीक है। तो 70 रुपए बचे आपके पास, 40 रुपए आपकी सेविंग हो गए, तो खाली आप 30 रुपया खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट शुड बी योर मैथ, ओके। And if you're talking about debt as a fixed income instrument, 10% in your portfolio, you can have provided. So we normally use asset allocation thumb rule, 100 minus your age should be in equity. So if you're young, you should have more risky asset in your portfolio. So अगर आपका age 25 है, तो 100 minus age is 75, okay. And 75% can go into equity and 25%, 10% can go into gold and the remaining can go into debt.
So the logic is very simple. As you advance in age, your risk taking ability goes down, and you should have more allocation to safer investment like a bank FD and a fixed income instrument, and you can have lower investment in high risk investment like equities. Okay, so I think Sonal, she's asked the question. I hope you got the answer. He's answered both ways. So अगर लोन है तो वैसा भी सही है, और अगर डेट वैसे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पूछ रहे हो तो वो भी है. तो now you can plan your financial portfolio का आप वैसे ही modify कर सकते हो. Okay, in the chat, the last one that I see, guys, और कुछ है तो please जल्दी से chat में डाल दीजिए. We will then close the Q&A. But I know कि काफी सारे जो questions हमने already पूछे हैं, हमें हमारी audience से ही मिले थे, तो और किसी का कुछ रह गया है या किसी चीज पे आपको और जानकारी चाहिए तो please put that question in the chat box. Last one is what's the best way to build diversified portfolio for somebody who's starting now, who's a beginner? So for that, Sailesh, what do you recommend? So someone who is a beginner and wants to build a diversified portfolio, mutual funds sahi hai. Okay, and I think SIP is the best way of investing. I am making it very simple for you. Okay, and believe me, this is the approach. Don't complicate investment. It is very simple. Okay, start 4 or 5 SIPs, not many. Okay, and divide. अगर आपके पास 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने के लिए है तो 2,000 रुपये आप 5 फंड में इन्वेस्ट करिए. ओके, एंड you can continue that SIP as long as you want till the goal is reached. Okay, but then more than selecting the right mutual fund, also it is important to have that patience and discipline. Okay, and if you are in the equity market, you need to have that patience, and I'm sure with SIP you will get your discipline. So yes, I hope you've got the way forward. So don't wait anymore. Start your journey. So start your mutual fund investment from tomorrow, Maima. So okay, is there anything else that I've missed? I think we've answered most of the questions. Everything is covered. So yes, that. Okay, thank you. I hope we don't have any more queries coming in, but you can keep sending that across to us, and we can, via mails or chat, we can reply to you on that. So thank you so much, Sailesh, for sharing your valuable insights as always. And a big thank you to all our audience who is here today. Thank you so much for being there for the session. We hope this session did help you guys to actually start thinking differently, differently about investing, and also make sure that you start asking the right and complete question. So remember, asking the right and complete question is going to be the first step to your financial success. Until next time, let's continue growing, learning, and investing wisely. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ritika. Thank you, Blue Bindi team. Thank you. Bye-bye, everybody. See you. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.